ऑलराइट जी। अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू दी एथिक्स। और सबसे पहले आइए एज पर प्रैक्टिस हम लोग जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं। In relation to pointer echo potential acceptance of setter company as a client of the firm, explain the ethical issues and other matters which should be considered. बस यहाँ तक ठीक है, हमने यही रिक्वायरमेंट देखनी है इस वीडियो में। 16 मार्क्स की वैसे रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप लगा लें इसको माइंड में कि ये आपकी 8 मार्क्स का होगा आपका पार्ट 1। राइट, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपन सिनेरियो। ठीक है जी, यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन पॉइंटर एंड कंपनी, फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स व्हिच ऑफर अ रेंज ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। यू आर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ Viscilla company, a company which provides approximately 10% of your firm practice income each year। एक पॉइंट ये कर लें जी, मटेरियल बात हो गई, ये 10% फर्म की इनकम इसी क्लाइंट से आ रही है, किससे? विस्लर कंपनी से। अच्छा, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ विस्लर कंपनी हैज रिसेंटली कॉन्टेक्ट यू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंपनी, और उस कंपनी का नाम क्या है? सेटर कंपनी, विच इज लुकिंग टू अपॉइंट अ प्रोवाइडर ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है जी, एश्योरेंस सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईमेल व्हिच द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ विच सेलर कंपनी हैज सेंट टू यू इज शोन बिलो। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट उसने आपको कांटेक्ट करा विस्लर कंपनी ने कि जी आप उनको दूसरी कंपनी की इंफॉर्मेशन दें। सेटर कंपनी जो है वो अपॉइंट करना चाहिए एश्योरेंस के लिए। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईमेल अब ये आ रहा है हमारे पास, वन ऑफ माय फ्रेंड्स गोल्डन पॉट्स इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेटर को। ठीक है जी, a small company which is looking to expand in the next few years। ठीक है, I know that Gordon has approached the company's bank for finance of 6 million to fund the expansion. To support this loan application, Gordon need to appoint a firm to provide a limited assurance on the company's financial statements। ठीक है जी, गॉर्डन ने जो है वो बैंक अप्रोच करा 6 मिलियन लोन के लिए, $6 मिलियन लोन के लिए, और इस लोन एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए उसको लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ही वुड आल्सो वांट द अपॉइंटेड फर्म टू प्रोवाइड टैक्स प्लानिंग एडवाइस एंड टू प्रिपेयर बोथ द कंपनीज एंड हिज पर्सनल टैक्स कंप्यूटेशन फॉर सबमिशन टू द टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, आई हैव आस्क्ड गोर्डन टू कांटेक्ट यू एंड आई होप दैट पॉइंटर को विल बी एबल टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज सेटर को फॉर एज लो एज पॉसिबल फी। ठीक है जी, मानो ना मानो, बल्कि मानो ही बेटा, इंटिमिडेशन थ्रेट आ गया। ठीक है, if the fee you क्यों आगे से देखो, if the fee you suggest is too high and unacceptable to Gordon, then I will recommend Gordon approaches Grifton and Co instead, and I would also consider appointing Grifton and Co to provide the audit of Viscilla company। मिल गया इशारा, इंटिमिडेशन थ्रेट है कि बेटा उसको कम फी में रखना, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पास से कट लूंगा। समझे या नहीं? चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन एंड को इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स एंड व्हिच हैज अ फर्म ऑफिस इन द सेम town and as pointer को। ठीक है, ये भी पता चल गया। You have done some research on the both Saturn and Co and Gordon Ponds and have confirmed that the company is small enough to exempt from audit। The company is owner managed with the Potts family owning 90% of the shares capital। ठीक है जी, Gordon Pott is the director and majority shareholder of other three companies। An article in a newspaper from several years ago about Gordon Pott indicated that one of his companies was fined for breach of employment law and that he had used money from one of the company's pension plans to set up a business abroad, appointing his son as managing director of the business। चलो जी, एक बात आपको और मिल गई यहाँ पे कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आपको पता चला कि उसने एम्प्लॉयमेंट लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं, उसको ब्रीच करा है, और जी उस कम पैसे को उसने यूज करा है जी, पेंशन के पैसे को यूज करा है एक और बिजनेस सेटअप करने के लिए अब्रॉड में, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर उसने अपने बेटे को अपॉइंट कर लिया।
इशारा मिल रहा है एक और चीज का, स्मेल का, कि बेटा कहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये तो हाँ हमारा अब सिनेरियो। और अब हम लोग चलते हैं जरा अब अपनी वर्ड फाइल की तरफ एज यूजुअल। और यहाँ पे हम लोग अब अपना सिनेरियो लिखना शुरू करते हैं। जी जनाब, मैंने अपनी पार्ट वन टू ए पार्ट वन की पहली हेडिंग मैंने दे दी, एथिकल एंड अदर मैटर्स टू बी कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग सेटर को एज अ क्लाइंट। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस related to accepting a client and continue the relationships with the existing client given in the ISQC1, which are as follows. Okay, number one, the competence and integrity, sorry, competence and compatibilities of the particular client. Capabilities of the particular client, oh, sorry, particular firm, ठीक है, including time and uh, including time and to perform resources to perform the engagement। ठीक है जी। ओके। पहले हमने क्या बात करी जी कि एज पर ISQC1 जो गाइडेंस हैं उसके मुताबिक जो हमें कंडीशन मीट करनी है वो क्या है जी, आपके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज हैं including time and resources to perform the engagement. Number two, whether the ethical requirements requirements can be complied with, कि जो ethical requirements आप उसको fulfill कर सकते हैं। Number three, the integrity of the client। ठीक है जी। integrity of the client, अच्छा, and whether there is any information regarding the client that it's lack integrity, ये भी मैंने बात कर दी। ठीक है। ये भी हमारी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं ISQC1 की, जो कि हमें क्या कहना चाहिए, फुलफिल करनी है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। Competence and resources. There seems no reason that pointer and co is not competent to provide services like limited assurance review, because they being a firm of chartered certified accountants and having a client like such as Visila company, there seems to be
competent enough to provide limited assurance company review. ठीक है जी। अभी तक मैंने क्या बात करी कि भाई कोई ऐसी रीजन नहीं है नजर आ रही कि जी पॉइंटर कंपनी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक लिमिटेड एश्योरेंस बिकॉज being a firm of chartered certified accountant clients such as Whistler company ठीक है वो कॉम्पिटेंट इनफ नजर आ रही कि वो लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलें जी। द प्रेशर फॉर ऑडिट for low fee would restrict the pointer to perform high quality, high quality uh, audit with with restricted resources available। ठीक है जी। ये बात हो गई मेरी। आगे मैं बात क्या करूँगा? आगे मैं बात करूँगा कि चलिए आगे बात करूँगा गिवन द लो फी फॉर लो फी uh, yeah, given the potential restriction on the low fee, ISQC also mentioned that if the client pressurize for the low fee uh, low fee or low low as possible indicates the lack of integrity of mind। ठीक है जी। इतना हमारा काफ़ी है। यहाँ पे इन दी एंड मैंने बात कर ली जी। लो फी से जो है ये हो सकता है कि ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्ट किया जा सके क्लाइंट को कि जी वो जल्दी जल्दी काम को निपटाए और ज़ाहिर है वहाँ पर हाई क्वालिटी का ऑडिट पॉसिबल नहीं होगा। और पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शन जो है लो फी की उस पे के बारे में इस QC1 का कहना है कि जी इंडिकेट करता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी क्लाइंट की लैक कर रही है। ठीक है। सो फार सो गुड। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। राइट जी। अगली हेडिंग मेरी क्या होगी? एथिकल इश्यूज। और यहाँ पे मैं कहूँगा देयर आर सेवरल एथिकल इश्यूज कंसीडर। फर्स्ट pressure from another company, this Zilla company, to offer to charge as low fee as possible setter company. Otherwise, they will also switch to other audit firm, Grifton and Co. is a, intimidation threat। ठीक है जी।
ये आपके लिए क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। अच्छा जी, मजीद इस पे क्या बात होगी मेरी, इस पे मजीद बात होगी कि as a pointer and co gets 10% of annual income from this company, it could also perceive that it could also perceive that it is a financial interest for reseller, sorry, for pointer company to maintain a good relationships with the client, या आप लिख लें विजिटर कंपनी। ठीक है जी, सो फॉर सो गुड। आगे हम लोग क्या बात करेंगे? ओके, फर्दर ethical issues arises from the suggestion that pointer co has to provide tax planning advices to setter company along with the annual tax submission, which could get uh, self review for the pointer. Also, uh, as these figures later on will be part of the limited assurance review। ये बात भी हो गई मेरी, ठीक है। के जी फर्दर एथिकल इश्यूज ये हो सकते हैं कि पॉइंटर एंड कंपनी ने टैक्स प्लानिंग एडवाइसेस का भी कहा है उनको देने का, और जिससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वही फिगर्स आगे लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में आ रहे होंगे। सही है। तो मजीद हम लोग इसके अंदर क्या बात करेंगे, मजीद इसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि के also tax planning advice uh, can be assumed as a management role because of decision making on behalf of management is involved in it। ठीक है जी, मैंने ये बात भी कर ली है कि इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, ये इशू भी आ गया। तो भाई ये the pointer who has to consider whether these ethical threats can be reduced to an acceptable level by safeguards such as using separate teams audit for the limited assurance and services if this threat can not be used
and pointer and O reject the applicant should not accept the tax services. ठीक है जी, यहाँ पे मज़ीद मैंने क्या लिख दिया भाई, फर्दर एथिकल इश्यूज में बता दिए क्या हो सकते हैं। और फिर मैंने बोला कि जी आप यहाँ पे हम कंसीडर करें कि एथिकल थ्रेट्स क्या जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं किसी भी तरह सेफ गार्ड्स अगर अप्लाई करते हुए, सच एज सेपरेट टीम्स यूज़ की कर ली जाएँ दोनों के लिए, अगर किसी भी तरह जो है वो ये नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती है, तो आप क्या करेंगे जी? आप टैक्स सर्विसेज को मना कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अगली हेडिंग की तरफ मूव करना। ओके जी, अब क्लाइंट इंटीग्रिटी मेरी आखिरी हेडिंग है यहाँ पे इस क्वेश्चन की, जिसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा कि जी कंप्यूटिंग, ओके, कंप्यूटिंग, अच्छा, कंप्यूटिंग पर्सनल टैक्स computations is less of an objectivity as personal tax computation connected with the financials of the further issues need to the integrity of the client need to be evaluated carefully. Here, the reputation of the client is questionable as 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 the key issue to the integrity is due to the breach of employment law, employment law from the pension of pension funds, and those money used to set up business in abroad, which is managed by his son. The news came from the from article of newspaper, and maybe it is not credible, so more credible information need to be obtained from other sources. Maybe they are innocent, innocent, or maybe they involved see in serious breach of laws and
रेगुलेशन, ये बात भी मैंने कर दी थी कि जो आर्टिकल से न्यूज़ मिली है, हो सकता है ज़्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमें दूसरे सोर्सेज से उठानी चाहिए। हो सकता है कम्प्लीटली इनोसेंट हो सकता है कि वो सीरियस ब्रीच ऑफ लॉज और रेगुलेशन का इशू हो यहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली रेलिवेंट लॉज वगैरह से पता चले। फाइनली जी हम लोग बात करते हैं कि जी टेकिंग मनी environment law and setting up the business in the foreign country is more complicated. Uh, Taking money from the employment funds, loaning employment funds, and setting up the business in foreign country is more complicated. Yeah, maybe public complex business arrangement as they may be innocent or it's a part of sinister criminal activities which need to be evaluated carefully. For example, setting up a business abroad and maybe a maybe a part of money laundering, that is money laundering. ठीक है, आखिर में एक लाइन छोटी सी पॉइंटर्स and who should evaluate and consider all the factors carefully and then decide whether to take to a as a client or not, and they should all the findings according to ISQC ISQC 1। That's it। यहाँ ये हमारा जो है क्या कहना चाहिए सोल्यूशन है फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हमें जो है वो सिनेरियो को यूज़ करते हुए हमसे बात करना था इस पार्ट का। सी यू नेक्स्ट टाइम।